Yes, good afternoon to dear students. Today I will discuss about the selection of hydraulic turbines for power station and the selection of the site. This is the part of the unit 4 and the last lecture of the unit 4. This is the subject name is the power plant engineering. This is the outline of the today lecture. Introduction about the hydraulic machine, classification of the hydraulic machine, site selection factor, availability of water, water storage, water head, accessibility of the site, distance from the load center, and the type of the land of the slide. तो what is the introduction of the today's slide? हाइड्रोलिक टर्बाइंस जो कि आपको पता है इसका मेन फंक्शन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का रहता है. If the machine transforms mechanical energy into the hydraulic energy, it is called a pump. यदि मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसे हम पंप का नाम देते हैं. Therefore, in a turbine does work on the machine and machine produce the power. इसीलिए जो टरबाइन रहती है वो मशीन के ऊपर वर्क करती है और मशीन पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि पंप जो है पावर को एब्जॉर्ब करता है. तो टरबाइन इज द वर्क डिलीवरिंग डिवाइस, वेयर इज द पंप इज द वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस बिकॉज ऑफ द वर्क इज डन ऑन द fluid. The mechanical energy developed is the utilized for running an electric generator which is directly coupled to the shaft of the turbine. This is the device where the mechanical energy is converted into the electrical energy by the electrical generator, and the electrical power developed by the electrical generator is known as the hydroelectric power. तो जितनी भी पावर डेवलप हो रही है इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा उसको हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर का नाम दे रहे हैं. And the generation of the hydroelectric power is cheaper than the other resources like the coal, oil, and the etc. In the general, the principal component of the turbine is the rotor. The rotor is a wheel carrying a number of the plates and the vanes on its periphery. The rotor is a house in a stationary casing, and the water possesses a good amount of the potential energy, which is allowed to flow the pipe and the finally discharge to the nozzle and thus getting the kinetic energy. Because of the rotor, जैसा कि आप सभी को पता है, एक स्टेशनरी केजिंग होती है जिसमें कि वाटर अच्छे अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, जो कि पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है और उसको फाइनली डिस्चार्ज किया जाता है नोजल के थ्रू, ताकि हम काइनेटिक एनर्जी को गेन कर सकें. जैसे ही पानी स्ट्राइक करता है रनर पे, तो वहां पे जो ब्लेड्स लगी हुई हैं या बोलना चाहिए कि रनर्स की ब्लेड्स पे अटैक करता है तो वो रोटेट होती हैं और उसके रोटेट होने से मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होती है और मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन जनरेटर में सप्लाई करने का रहता है कि वहां पे हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें. And the generator is coupled with the help of the mechanical rotor. And the main classification of the hydraulic turbine, which is depending on the following condition: action of the water, direction of the flow of water, available head, and the specific speed. There are the 4 parameters on which the hydraulic turbines may be classified. That is the impulse turbines and the reaction turbine on the basis of action of water. There is a no pressure drop on the runner and the rotor, that is the kinetic energy coming out from the water side, and the jet side that is used to run the runner or rotor. There is a no pressure drop. तो पेल्टन व्हील इसके अंदर में आती है इम्पल्स टरबाइन में. रिएक्शन टरबाइन, देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द प्रेशर एनर्जी ऑन द रनर्स ऑफ द बुलेट्स. दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन. ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जब पानी जो है बुलेट्स पे स्ट्राइक करता है रनर की, तो वहां पे जो टेंजेंशियल फ्लो हो रहा है वो पेल्टन व्हील टरबाइन कहलाती है. रेडियल फ्लो की यदि बात करें कि यदि पानी स्ट्राइक हो रहा है बुलेट्स पे रनर के, तो कमिंग आउट एज अ रेडियल फ्लो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रांसिस टरबाइन. In this flow, the water flows parallel to the axis of the turbine. This is the axial turbine, and the axial turbine example of the Kaplan turbine. Available head के बेस पे यदि क्लासिफाइड करेंगे तो हाई हेड, मीडियम हेड एंड द लो हेड की टरबाइन होती है. तो हाई हेड की टरबाइन वो टरबाइन कहलाती है जो कि 300 मीटर के अबव में काम करती है, उसे हाई हेड टरबाइन बोलते हैं. मीडियम हेड की टरबाइन उसको बोलते हैं जहाँ की 60 मीटर से 300 मीटर के बीच में काम करते हैं. तो फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड में आती है. लो हेड टरबाइन वहां पे काम करती है जहाँ पे लो रेंज का पोटेंशियल हेड होता है और हेड जो है 60 मीटर से कम होता है, वहां पे लो हेड टरबाइन काम करती है. स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर यदि काम करेंगे देखेंगे तो लो स्पेसिफिक स्पीड, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड, हाई स्पेसिफिक स्पीड, 3 तरह की टरबाइन होती है. तो यदि टरबाइन 10 से 50 यानी बोलना चाहिए रेंज यदि 10 से 50 रहती है तो उसे लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का नाम देते हैं, जो कि पेल्टन व्हील टरबाइन होती है. मीडियम स्पेसिफिक स्पीड की बात करेंगे तो टरबाइन यदि वर्क कर रही है 50 से 350 आरपीएम के बीच में तो उसे फ्रांसिस टरबाइन का नाम दे रहे हैं. और हायर स्पेसिफिक टरबाइन, यदि टरबाइन जो है 250 से 850 आरपीएम के बीच में काम कर रही है, जैसे कि कपलान टरबाइन है,
तो ये हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन कहलाती है. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोलिक टरबाइन इन द डिटेल वे. Another way, the what is the difference between the impulse and the reaction turbine? So impulse and reaction turbine, that is the it's a different thing. अवेलेबल एनर्जी जो रहती है इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इम्पल्स के केस में, जबकि रिएक्शन के केस में जो मेजर पार्ट है अवेलेबल एनर्जी रहती है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. Second thing is the pressure in the turbine is a constant. This is the explanation to the impulse turbine and the reaction turbine in which the device blades should be accessories to free air must not run fully. Because of the pressure energy will remains the constant from the inlet to outlet, and the pressure gradually reduces while water flows to the turbine blades. That is the case of in the reaction turbine. And the blades are always under the actions of the pressure. The wheels must always run fully. In the case of the impulse turbine, the blades must not run the fully with the water. And in the case of the impulse turbine, also only one phase of the blade is active. Because and another side, the reaction turbine, the both phases of the blade will be active, both sides. And the regulation of the flow and the power is easier without loss of the energy. That is the impulse turbine. In the case of the reaction turbine, then the regulation of the flow and the power is not easier as are difficult. It is used for the high head impulse turbine, and the reaction turbine it is used